चलिए स्टार्ट नो करें। सर। So comparison of speed of sound with speed of light, हमें पता है speed of sound is much less than speed of light, और यही रीजन है कि हम लोगों को कभी कोई भी चीज जैसे लाइटनिंग ही होता है तो हमें साउंड ऑफ थंडर जो है वो बाद में सुनाई पड़ता है और लाइटनिंग पहले दिखाई पड़ता है। तो उसी तरह अगर जो अ, कोई पटाखे चलाते हैं हम लोग तो जो आतिशबाजी है उसकी लाइट उसकी रोशनी पहले हमें दिखती है और आवाज बाद में सुनाई पड़ता है। तो दैट्स बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। So there are the following 4 points of distinction between propagation of sound and light wave. First is the light wave can travel in vacuum, but sound wave cannot travel in vacuum. So the difference between the propagation of speed of sound with speed of light अगर हम लोग compare करें, so first point which needs to be mentioned here is that light can travel in vacuum, but sound cannot travel in vacuum. So this is the first point of comparison. Second is the speed of light wave is 3 into 10 to the power 8 meter per second in air, which is about a million times greater than speed of sound wave in air. So speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second, and this is 330 meter per second. Now, speed of light wave decreases. So speed of light wave decreases in an optically denser medium. Speed of light in water is 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. In glass, it is 2 into 10 to the power 8 meter per second. While the speed of sound wave is more in solid, less in liquid, and less than in gases. So opposite hai. So speed of sound in steel is nearly 5,100 meter per second. In water is nearly 1450 meter per second, and in air it is 330 meter per second. Fourth point is the light waves are transverse electromagnetic waves, while the sound waves in air are the longitudinal mechanical waves. Okay. So light waves are transverse electromagnetic waves और sound waves क्या है? Longitudinal mechanical waves. ठीक. So light waves are transverse electromagnetic waves and sound waves are longitudinal mechanical waves. Now, consequences of the large difference in the speed of sound and that of light. So consequences of large difference in the speed of sound and that of light. First is thunder and lightning. तो हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं डेली फिनोमिना में. So in thunder light is seen much earlier than sound of thunder is heard, although they are produced simultaneously. The reason is that light takes almost negligible time in comparison to sound in reaching us from the place of thunder, because speed of light is much more than the speed of sound. Second point is when the starter in an athletic event fires a gun, a spectator sitting at the distance hears the sound of fire a little later, while the smoke is instantaneously seen. The reason again is that speed of light is much larger as compared to speed of sound. है ना, ये दो ऐसा साइन मतलब very very greater than speed of sound. The spectator watching the cricket game hears the sound of stroke a little later than the batsman is seen actually making it. The reason is that speed of light again is very very larger as compared to speed of sound. क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया सबको? Yes. Yes, sir. Now, experimental determination of speed of sound in air. The fact that light travels in air about a million times faster than sound can be used to determine the speed of sound in air. So, experiment choose two places, A and B at high altitude facing each other at a known distance d apart, say about 1 kilometer in still air. The distance d is noted at each place. There is an observer with a gun and a stopwatch. First, the observer at a place A fires the gun, while the observer at place B starts his stopwatch immediately on seeing the flash of
fire at A and stops it when he hears the sound of the fire. The observer at B by his watch thus finds the time interval T1 taken place taken by sound to travel from A to B. Now the observer at place B fires the gun. The observer at place A starts his stopwatch when he sees the flash of fire at B and stops it when he hears the sound of fire. Thus the observer A Thus the observer A by his watch finds the time interval T2 taken by sound to travel from B to A. The average of the two time interval is T1 plus T2 upon 2. So this is the time taken by sound to travel the distance D between the places A and B. So speed of sound is then calculated by using the formula distance upon time. So V is equal to D upon T. Now in this experiment, we observe the distance. So in this experiment, we observe the time interval two times. First, for sound to travel from place A to place B and then from place B to place A, so as to eliminate the error arising due to flow of wind. However, the speed of sound so determined is not still very accurate because of the personal error of the two observers and the variation in temperature and humidity of air in between the places A and B. So this is basically कि मान लो हमारे पास दो पॉइंट है. So let's say we have 2 points. I'll just explain the experiment once again. So यहाँ पर से जब गन फायर किया गया तो जो बी ने जब ऑब्जर्व किया यहाँ पे गन फायर होता हुआ मतलब फायर उसको दिखा पहले जब और when he heard the sound, so let's say the time taken during this is T1. So between the interval where when he heard the sound and when he saw the fire, so इसमें जो time बीता that is T1 और उसी तरह जो ए पे जो ऑब्जर्वर है उसने जो यहाँ बी पे जब फायर किया किसी ने तो उसके उसके फायर को देखने और सुनने के बीच में जो टाइम इंटरवल था दैट वाज T2. So T1 is the time of sound to travel from this A to B and T2 is time of sound to travel from B to A. अब दोनों का अगर हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं तो दिस इज द एक्चुअल टाइम T which is taken by sound to travel from A to B. Now the velocity speed of sound will be distance between them divided by time. So V is equal to D upon T. So this will give you the speed of sound experimentally. Is it clear? Clear है बच्चों? Yes, sir. Now we'll do the examples, numerical examples, which are there in your book. Okay. Take out your notebook and you can note it down now. The first question is a bat can hear sound of frequencies up to 120 kilohertz. Okay. Determine the minimum wavelength of sound which it can hear. Taking the speed of sound in air is 344 meter per second. So frequency is 120 kilohertz. Kilohertz means 120 into 1000 hertz. Speed of sound is 344 meter per second. Now, speed is equal to wavelength upon time period, wavelength upon into frequency. So wavelength is speed upon frequency. So speed is 344 divided by 120 into 10 to the power 3. So 344 divided by 120.
2.86 into 10 to the power minus 3 meter. ठीक है. So this is the wavelength. So minimum wavelength of sound that it can hear. So this is the wavelength of sound that it can hear. Is it clear, बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? त्रिशा भी आ गई? कब आई त्रिशा? पता ही नहीं सर चला. वो थोड़ा सा लेट हो गया था, अच्छा. मैं सोती रह गई थी. तबीयत कैसी है आपकी? सर अभी बेटर है. दिवाली मनाया? हाँ जी, पटाखे छोड़े? थोड़ा थोड़ा. नहीं सर, अच्छा, तुम सेफ दिवाली मतलब सर अलाउड ही नहीं थे और घर से नीचे नहीं उतरे. हमारी सोसाइटी में 40 केसेस हो रहे हैं एक्टिव. मतलब हमारे सोसाइटी में भी मतलब मशरूम की तरह केसेस बढ़ रहे हैं. आज भी हाँ मैसेज आया, सर, 8 में से 8 लोग और कोविड पॉजिटिव हो गए. तो वैसे ही बढ़ रहा है तो मैं नीचे भी नहीं, मतलब बस 5 मिनट्स के लिए गई थी. नहीं नहीं बेटा, बी सेफ. इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. 15 दिन बर्बाद हो जाएंगे, ऊपर से कमजोरी अलग बहुत ज्यादा. हाँ सर. सो बी सेफ, घर पे ही रहो. 1-2 महीने की बात है, 1.5 महीने की. आई थिंक दिसंबर एंड तक द वैक्सीन विल बी हियर. यू ऑल विल बी गेटिंग दैट वैक्सीन. तो 1.5 महीने अपने आप को बचा लो. और हाँ जहाँ जी सर. इतने दिन बचे हुए और 1.5 महीने और से. ओके, चलिए, गुड. और बाकियों का कैसा बीता दिवाली? ठीक है सर. सर से नीचे नहीं जा पाए. ऐसे घर पे ही थे एग्जाम और फैमिली के साथ ही किया हम तो, घर में जितने भी लोग हैं. अच्छा अच्छा. नहीं, वो भी एक अच्छी चीज है. सब लोग पहले क्या होता था, सब फैमिली मेंबर्स इधर उधर भागते दौड़ते रहते थे. तो अब टाइम मिलता है फैमिली के साथ ज्यादा. सो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग ओनली एक्चुअली. यस सर. कबीर और त्रिशा तो एक ही सोसाइटी में है मेरे ख्याल से. उपमन्यु भी आसपास ही रहता है इन लोग के. यस सर. आकांक्ष, तुम्हारा कैसा रहा बेटा? बोर हो गए बहुत? कोई कहीं घूमने भी गया था? नहीं. नहीं सर, पर दोस्त गए थे. चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन है, ocean waves of time period 10 second have wave velocity of 15 meter per second. तो टाइम पीरियड है 10 सेकेंड ओशियन वेव्स का. कैपिटल टी हो गया 10 सेकेंड्स. और वेलोसिटी v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड दे रखा है. वेवलेंथ लैम्डा निकालना है हम लोग का. जो फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड. वेवलेंथ लैम्डा इज स्पीड इनटू टाइम पीरियड, है ना. ये फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना है. v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी और लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी f. तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो उससे f इज इक्वल टू 1 अपॉन टी. तो इससे पूरे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे. सो v इंटू टी कह रहा है 15 इंटू 10 कर लेंगे. 15 इंटू 10. सो दिस इज इक्वल टू 150 मीटर हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर. सेकेंड पार्ट में कह रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन अ वेव क्रेस्ट एंड इट्स एडजॉइनिंग वेव ट्रफ. तो देखो, क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस बोल रहा है. भाई क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस इज 1 वेवलेंथ. क्रेस्ट और ट्रफ का जो डिस्टेंस है दैट विल बी हाफ ऑफ द वेवलेंथ. आप लोग को याद होगा कि ये जो क्रेस्ट क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस लैम्डा होता है, वेवलेंथ होता है. तो क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये हाफ द वेवलेंथ हो जाएगा. सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन
So horizontal distance between a crest and a trough is equal to lambda by 2. वेवलेंथ है 150 मीटर डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे 75 मीटर. Is it clear? क्लियर है सभी बच्चों को? Yes. लिख लिया सभी ने? Sure, बस एक से. Yes. थर्ड क्वेश्चन कह रहा है a wave pulse of frequency 200 hertz. तो फ्रीक्वेंसी दे रखा है हमें 200 hertz on a string moves a distance 8 meter in 0.05 seconds. So distance moved is 8 meter. Time taken is 0.05 seconds. So speed is equal to distance by time 8 by 0.05. So this is 160 मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड निकल गया हमारा. अच्छा, वेलोसिटी ऑफ पल्स पहला निकालना ही था हम लोग. फर्स्ट पार्ट हो गया ये ए पार्ट. बी पार्ट कह रहा है वेवलेंथ ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग. सो देखो स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. लैम्डा वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी. Speed is 160 upon 200. 0.8 meter. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कंपेयर अप्रोक्सीमेटली द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड स्टील. तो देखो हमारे पास जो बुक में टेबल है उसको यूज करेंगे. स्पीड ऑफ साउंड, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड. Speed of sound in steel so speed of sound in steel is 5100 meter per second. अब हम लोग को रेशियो निकालना है. So speed of sound in air by speed of sound in steel, 330 by 5100.
11 upon 1 is 70. This is approximately equal to 1 upon 15. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Next question है, the smoke from the gun barrel is seen 2 seconds before the explosion is heard. मतलब explosion को 2 सेकंड लगा साउंड को ट्रैवल करने में, है ना? Assuming कि the smoke, the light is seen instantly. Assuming, ये जो कह रहे हैं ना approximation used, हम approximation use कर रहे हैं कि light reaches us instantly. ठीक है? Assuming light reaches the observer instantly. Okay. Assuming light reaches the observer instantly. So smoke from the gun barrel is seen 2 seconds before the explosion is heard. So time taken is 2 seconds. Speed of sound is 340 meter per second. Distance is equal to speed into time. 340 into 2, that is 680 meters. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Next question is, speed of sound in air is 330 meter per second and in water is 1650 meter per second. It takes 2 seconds for the sound to reach a certain distance from the source placed in air. Find the distance. How much time will it take for the sound to reach the same distance when the source is in water? So first case में, है ना, हमें distance निकालना है. Distance is equal to speed of sound in air into time. So this is 330 into 2, 660 मीटर हो गया. ठीक है. B part कह रहा है, how much time will it take for the sound to reach the same distance when the source is in water?
So time taken for sound to travel in water is equal to distance by speed, distance upon speed in water. So distance is 660 meter divided by 1650. So this is 0.4 seconds. Is it clear, बच्चों? लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir, लिख लिया. Now we'll start doing the questions, numericals from the exercise. तो मैं क्या करूंगा कि आप लोग करना शुरू करो, मैं पीछे से करूंगा. So I'll do it later on. First you have to start doing it. ठीक है? Please attempt करना शुरू कीजिए आप लोग.
let us start. First one is the heart of a man beats 75 times a minute. Okay. So number of beats, I'm doing the first one first. Number of beats is 75. Time is equal to 1 minute, which is 60 seconds. Frequency, number of beats per second हो जाएगा frequency. So frequency is number of beats per second. So 75 by 60. 1.25 per second. Time period is 1 upon frequency. 1 by 1.25, 0.8 seconds. Clear है बच्चों? Yes, sir. Second question is the time period of a simple pendulum is 2 seconds. So t is equal to 2 seconds. Frequency is 1 upon time period, 1 by 2. This is 0.5 hertz. ये दोनों लिखिए और आगे ट्राई कीजिए दो और.
Let's do the next two. Third question is, the separation between two consecutive crests in a transverse wave is 100 meter. So separation between two consecutive crests means wavelength is equal to 100 meter. ठीक है, ये जो दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ होता है. Wave velocity is 20 meter per second. Find the frequency of wave. Frequency निकालना है. Speed is equal to lambda into f, or f is v upon lambda. 20 by 100, 1 upon 5, 0.2 hertz. Fourth कह रहा है longitudinal wave travels at a speed of 0.3 meter per second. So speed is 0.3 meter per second and the frequency of wave is 20 hertz. F is equal to 20 hertz. Find the separation between two consecutive compression. मतलब lambda निकालना है आप लोग को. So V is equal to lambda into F. So lambda is V upon F. So this is, sorry, lambda is V upon F. So और lambda is speed हम लोग का दे रखा है 0.3 upon 20. So 0.03 is 0.015 meter, 1.5 centimeter. Clear बच्चों?
आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और देयर आर 11 क्वेश्चंस, तो इनको अटेम्प्ट कर लीजिए। कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा मेरे से, ठीक है बच्चों? ओके सर। Okay, sir. स्टॉप हियर, बाय एंड टेक केयर।